Hi everyone, and welcome back to day two of Android Compose Camp. Those who have not aware about what is Android Compose Camp, basically this is a study jam program which started on 15th of September, and this is a 1 month program. So basically, the developer Google Developer Student Club (PGDAV) has started this program, and it will end till um, 8th of October. So एक महीने का ये program है, which is a free of cost, where we will help you to develop or start your Android development journey. Okay. सो दोज हु हैव नॉट अवेयर अबाउट डे वन, तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं जो हमने डे वन में डिस्कस किया था. ओके. And you can also answer while using the in call messages, and you can ask questions, और कुछ भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो. ओके. तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हाँ, लास्ट जो अभी हमने कंप्लीट किया था, लास्ट टू लास्ट थर्सडे, so that you have an idea about कि क्या क्या हमने डिस्कस किया था. And those who are new, I hope they have already watched the day one recording which is shared in the Android WhatsApp group. Okay, so that you have an idea about कि हम what is all about, what is Compose Camp. Okay, and how you can start your development journey, because there are 3 to 4 basic steps here, and links are also shared in the Android group. So make sure to go through all these links so that you have an idea, and day टू उस हिसाब से तुम कंप्लीट कर सकते हो. ओके. तो आगे चलते हैं. So basically, my name is Samarjit Mai, and I am a campus Android campus lead for this year in PGDB College. And I have recently graduated from PGDB in from BSc Computer Science stream, and currently I am pursuing MCA from Manipal University. Okay. And I'm also a beginner in Android. So basically, I'm also learning with you all guys. So ऐसा मत समझना कि मैं एक तरह का मतलब प्रो हूँ. सो आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग. सो वी आर एज अ कम्युनिटी आर लर्निंग एंड्रॉइड स्टडी जैम. ओके. इफ आई फील कि मैं कहीं पे स्टक हो जाता हूँ, देन आवर कम्युनिटी मेंबर कैन ऑल्सो हेल्प us to learn. Okay. And you have a WhatsApp group where you can ask your doubts about Android or about the learning path completion. Okay. So basically, community जो compose camp है, ये 1 month का प्रोग्राम है where we build Android apps using Jetpack Compose. So basically, Jetpack Compose Google का एक initiative है which help you to build Android app. And why we using Compose? Earlier we are using .xml to design our UI, which you see on the app. जो भी तुम UI देखते हो, जो buttons हैं और जो जो screens हैं, they are earlier made up of .xml file. तो जो भी हम कोड करते थे वो हम XML लैंग्वेज में करते थे. But recently Google has initiated Compose, which is a way easier than XML language. So with a short 3 to 4 line of code, you can easily able to design the UI of an app. Okay. That's why this year we have initiated the Compose camp, or how to build an app using Jetpack Compose. Okay. सो आज का जो शेड्यूल है वो इस तरह का है. फर्स्ट वी विल हैव अ रिकैप कि हमने डे वन में क्या क्या हमने डिस्कस किया था. Then we will go and deep into the fundamental of Kotlin. As you all know that we are building Android app using a language which is known as Kotlin. Earlier we are using Java to build Android native app, but recently we are jumped to Kotlin. Okay, there are lots of other languages. So for example, if you want to build app for Apple users. So for Apple users, you need to know about Swift language. Okay, to design apps only for Apple apps. Okay, and for Android native, only for Android, you can use Kotlin to design an app. Okay, and there are other languages such as Flutter, Dart. They are hybrid languages where in a single code you can design an app for both Apple users as well as Android users. But for this camp we are focused on only Kotlin language. Okay, which is only focused to design Android apps. So after recapping of day one, we will go into fundamental of Kotlin. And fundamental of Kotlin में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज?
loops as well as loops ही पढ़ेंगे क्योंकि function we have covered in the day one. Okay. एंड डोंट वरी, ये बिल्कुल हम एक बार शॉर्ट में रिकैप करेंगे. वी आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल बिकॉज फॉर डिटेलिंग यू हैव टू कंप्लीट लर्निंग पाथ विच इज प्रोवाइडेड बाय गूगल डेवलपर्स एज वेल एज आवर कम्युनिटी members. The link is provided in the group, so you have to check out the group. And after that we will do a practical session कि how to design a dice roller app. So मैं यहाँ पे Android Studio में एक ऐप बना के दिखाऊंगा within 15 to 20 minutes के अंदर, a simple dice roller app. Okay, उस पे फिर we will add buttons as well as images, how to add buttons and how to add images. And after that finally we will have a discussion about day 3 कि day 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. Okay, so basically this is a 1 hour session so that ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर स्टूडेंट बोर हो जाएंगे. So we'll try to complete the session within 1 hour. Okay, 7 to 8, 10 या 8:15 तक. And if you have any doubt during the session और कुछ भी पूछना है तो you can use the in हाँ जी। call messages option and I will happy to help you out, or one of our core member will also answer your queries. Okay, I guess 32 member have already joined, and if somebody is new, they can unmute or feel free to ask कि कुछ भी अगर doubt है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो you can use message option. And those who are already familiar with day one, they have already know कि हाँ किस हिसाब से complete करना है track. तो एक बार बिगनर्स के लिए एज वेल एज जो नए मेंबर आज ज्वाइन किए उनको भी एक बार मैं शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ कि किस हिसाब से हमें कंप्लीट करना है प्रोग्राम. ओके, तो ये रिकैप, तो ये हमारा शेड्यूल था. एंड देयर इज ऑल्सो अ ट्विटर चैलेंज गोइंग ऑन फॉर 1 मंथ. तो 1 मंथ के अंदर यू हैव टू use hashtag like hashtag compose camp या compose camp India. Also you have to use hashtag developer student club, Google Developer Student Club, or at the rate gdscpqdav at the rate Google Dev Sim. Okay, and you have to share a screenshot of any session and some learnings which you have learned during the 1 month Android Compose Camp. Okay, and जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक ही पोस्ट करना है, यू कैन पोस्ट थ्रू आउट द मंथ. एंड 3 to 4 lucky winner will get opportunity to get some stickers or Google T-shirt from our club. Okay, स्टिकर्स और गूगल टी शर्ट ये ऑप्शनल है, मतलब ये सब, मतलब अगर कोई जीतता है देन दे विल गेट दीज थिंग्स. ओके, सो मेक श्योर टू पार्टिसिपेट इन ट्विटर चैलेंज विच इज ओपन टिल 8th of October. Okay, and yep. So now to start the Android study and to Android study jam, Android Compose Camp, you have these basic requirement. Okay, you must join with laptop, must have an internet connection, and during the 1 month program you have to complete all the units. The total there are 4 units for the beginner track. Okay, and you must have some basic math skills. Don't worry if you don't have a prior experience, because in the learning path they start from basics to advance. Okay, so जो beginner है they can easily learn and start building Android app. Okay, so these are the reason why we are using Jetpack Compose. I've already discussed in the day one session, so kindly check out after this session. Okay, and as we all know that we are focus on only beginner track. Okay, there are 2 track, beginner and intermediate, so we are only focus on beginner track, and in beginner track there are 4 units. Okay, I'm just sharing these information to those who are new to this Android jam. Okay, Android Compose Camp. And what you will earn digital batches. And but before that you have to build a developer profile. The developer profile link is already shared in the Google Android WhatsApp group. So make sure to first create a developer profile, then only you can earn badges while completing all the units. Okay, so badges इस तरह से कुछ शो होते हैं, and one of our core member will also share the link in the comment or in the group. Okay, and beginner track में ये सारे prerequisite है. You must have a basic computer skills, basic math skills, and these are the unit which we have already completed in day one. तो unit 1 में हमने क्या क्या complete किया था? We have completed introduction to Kotlin कि Kotlin होता क्या है, why we are using Kotlin. And inside the Kotlin we have done some basic concept ki how to declare a variable, how to declare a function, how to print statements. So basic programming
syntaxes we have learned in day one. Okay, and during the 1 week program, I hope ki most of the student have completed the unit one. Okay, so in unit one there are three code labs. So first one is the introduction to Kotlin, basic हाँ, क्या होता है Kotlin and how you can start Kotlin language. Second जो code lab था, पाथ था, वो था कि how to set up your Android Studio. So I hope everyone has installed Android Studio in their laptop. If not, kindly install it by today so that you can easily able to build Android app. Because for building an Android app, we are focusing on a tool which is called Android Studio. You can also use VS Code. अगर जो VS Code use करते, they can also build Android from VS Code platform. But for this Compose camp, we are focusing on Android Studio, and each and every step is mentioned in the learning path, so you make sure to check it out ki how to set up Android Studio. After that, in unit 1 we have covered how to build a basic layout. So in basic layout we have covered how to build a birthday card app, a simple birthday card app where we add some images, some text, and how to align the images and text. So basic one page का एक हमने ऐप बनाया था, मतलब ऐप बनाया नहीं था, वी हैव डिस्कस इट, एंड आई होप एवरीबडी हैव कंप्लीटेड दैट लर्निंग पाथ. सो वो यूनिट वन के अंदर था. ओके, नाउ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली वी आर into unit 2. So in unit 2 we have to focus on some basic Kotlin fundamentals. So उसके अंदर हम we will go into some decisions like if else statements and when statements, when conditions. We have to go to these conditions, and I will share it in a later part of these slides. उसके बाद there are other object oriented programming की what are classes, how to use classes and objects and lambdas functions also. Then in the second path, in the second code lab, there is an app which we are going to build right now, which is a dice roller app. So in the second learning path, we are adding a button to an app. Okay. Then third जो app है वो है interact with UI and state. इस पे हम we are going to build a tip calculator app. For example, somebody have given 100 rupees, तो 15% जो यूजर होगा वो टिप देगा वेटर को, तो वो शो हो जाएगा कि 15% ऑफ द टोटल अमाउंट कितना है, तो वो ऐप में शो जाता है. तो बेसिकली वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इंटरेक्ट विद यूआई एंड स्टेट फॉर टुडे, बिकॉज नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा सेशन. सो वी आर फोकसिंग ऑन dice roller app ki how to add a button and some images to build that app. Okay, after that you have a 1 week time, so you have to complete the unit 2 by next Sunday. Okay, so that we will jump into the unit 3 next Sunday. Okay, so ये था recap. डे वन की वेरिएबल हमने डिक्लेरेशन किया था, व्हाट आर फंक्शंस, इंस्टॉलिंग एंड्रॉइड स्टूडियो, बेसिक लेआउट इन कंपोज, कॉलम क्या है होता है, रो, बॉक्सेस, देन वी बिल्ड अ बर्थडे कार्ड ऐप यूजिंग जेटपैक कंपोज. ओके, सो ये बेसिक रिकैप था, एंड आई विल जस्ट शो द लर्निंग पाथ सो दैट दोज हु आर न्यू इन दिस सेशन कैन अंडरस्टैंड कि हाँ होता क्या लर्निंग पाथ एंड कहाँ से तुम सीख सकते हो. ठीक है, अभी बस ये रिकैप कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू द यूनिट 2. ओके, just give me 1 to 2 minutes, after that we will start the unit 2. Okay, I'm just showing the learning path for those who are new in this session. Okay, your entire screen share. Yep, I hope my screen is visible. So there is a link. For example, there is a, if you just have to type developer.android.com courses android basic compose, the link is shared in the group, so you have to check it out. So this is the beginner track. So in the beginner track there are 4 units. So currently we are in unit 2. For those who are new in this session, have to complete the unit 1 first. So inside the unit 1 you just have to click explore, and in each pathway there are some certain batches which you have to earn. Okay, for this you have to build, you have to develop a developer profile. So just have to sign in and create a developer profile, then start completing all these tracks. Okay, so introduction to Kotlin ho gaya, setup Android, build basic layout. So let me click third one part. So yeah, so these are the code lab which you have to complete. Okay,
So you have to follow each and every instructions one by one, and just you have to click take code lab, and you have to complete all these instructions and then click done. Okay, so there is a progress bar which shows ki how much you have completed, and by the end of the code lab there is a quiz. If you successfully completed the quiz or passed the quiz, then this badge will be earned by you, and this will be shown in your developer profile. Okay, so ये है learning pathway, how to complete each learning pathway. Okay, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 वाला पार्ट. ओके, आई होप यूनिट 1 सबको पता चल गया होगा, एंड ऑलरेडी स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड द यूनिट 1 एंड दे हैव ऑलरेडी जंप टू द बिल्डिंग यूनिट 2 पार्ट. सो इन यूनिट 2 पार्ट वी आर गोइंग टू ऐप बिल्डिंग ऐप यूआई, एंड थोड़ा हम लर्न करेंगे सम कॉटलिन बेसिक्स. ओके, सो इन यूनिट 2 देयर आर 3 बैचेस व्हिच यू हैव टू अर्न. ओके, so ये था. So today we are going to learn some Kotlin fundamentals. So I just jump into the slide part. Wait, no. Still, if you have any doubt, you can ask in the in call message section. Okay. Let me share the presentation part. Uh, tab, mm, cancel or window. Window. Mm, yeah. Okay. So yeah, so basically in the unit 2 we have to learn some basics. Okay, to build an app, dice roller app. So dice roller app से पहले मैं थोड़ा basics बता देता हूँ कि जो जो हम use करेंगे in building an app. So in the Kotlin there are some conditions which we have to follow. So there are 3 to 4 conditions. First one is the if else statement. Okay, ये सबने पढ़ा होगा, those who are have already learned C++ or Java or Python, or those who are beginner, they can simply see the syntax. Okay, so yeah. So basically, decision making is also a fundamental concept in programming. Okay, so you write instructions about how a program should behave in a given situation, so that it can act or react accordingly when the situation occur. ठीक है, तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू पुट एन इफ कंडीशन. फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्रैफिक लाइट का. समझ लो हमने इनपुट दे रखा है ग्रीन. ओके, और यहाँ पे हम कंडीशन डाल देते हैं कि इफ ट्रैफिक लाइट कलर इक्वल्स टू रेड देन प्रिंट स्टॉप, नहीं तो एल्स प्रिंट गो. ओके, एंड यहाँ पे हमने कंडीशन डाला है कि इफ ट्रैफिक लाइट इक्वल्स टू रेड देन बॉडी 1 प्रिंट होगा, नहीं तो बॉडी 2 प्रिंट होगा. और जब यूजर ने बॉडी 1 का आंसर डाला होगा ट्रैफिक लाइट इज इक्वल टू रेड, देन बॉडी 1 विल प्रिंट. ओके, तो एक बार मैं कोड रन करके आपको दिखा देता हूँ, सो दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट इफ एल्स कंडीशन. ओके, so for practicing the Kotlin program basics, you have to go to Kotlin playground. You just have to type Kotlin playground in the Chrome, and there's an website Kotlin के नाम से एक playground खुल जाएगा, where you can practice side by side. Okay, एंड तुम्हें पता है कि हाउ टू राइट अ कोड. सो ऑल स्टार्टिंग हमेशा फन मेन से स्टार्ट होती है, एंड यू हैव टू इंसर्ट ऑल द कोड इनसाइड द फंक्शन पार्ट. ओके, तो आई हैव ऑलरेडी कॉपी अ कोड सो दैट आई डोंट हैव टू राइट इट एवरी टाइम. सो यहाँ पे हमने कंडीशन डिक्लेयर किया है. वी हैव यूज अ वेल ट्रैफिक लाइट कलर वेरिएबल, जहाँ पे हमने ग्रीन यूजर ने इनपुट कर दिया है ग्रीन. ओके, एंड वी आर यूजिंग if else condition. We are using 3 to more conditions. Okay, for example, अगर ट्रैफिक लाइट का कलर रेड है देन प्रिंट स्टॉप, नहीं तो अगर ट्रैफिक लाइट का कलर येलो है तो प्रिंट एलन स्लो, नहीं तो गो प्रिंट कर देगा. ओके, बट यहाँ पे हमने ट्रैफिक लाइट का कलर ग्रीन दिया है. ओके, बट यहाँ पे देखोगे इफ कंडीशन में ग्रीन कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो
जो कंडीशन है वो डायरेक्टली कहाँ चले जाएगा, वो सबसे लास्ट वाले एल्स में चले जाएगा। ओके, तो लेट मी क्लिक रन एंड इट विल शो द आउटपुट गो। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्रीन के बदले रेड प्रिंट कर देता हूँ, रेड। ओके, एंड यहाँ पे अब शो होगा जो आउटपुट स्टॉप, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इफ ट्रैफिक लाइट कलर इक्वल्स टू रेड विच सेटिस्फाई आवर कंडीशन, सो इट विल प्रिंट स्टॉप। ओके, एंड तुम्हें पता है वेल क्यों यूज करते हैं, वेर क्यों यूज करते हैं, ये सब डिक्लेरेशन। एंड ट्रैफिक लाइट कलर क्या एक वेरिएबल है विच स्टोर द इनपुट रेड, स्टोर कर रहा है ट्रैफिक लाइट कलर। और इफ के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन डाल रहे हैं कि अगर रेड आता है तो क्या प्रिंट होगा, रेड नहीं आता है, येलो आता है तो क्या प्रिंट होगा, अगर येलो भी नहीं आता है तो ग्रीन आता है तो क्या प्रिंट होगा। सो दीज आर द कंडीशंस। ओके, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस इट विल शो द आउटपुट। सो ये एक कंडीशन था इफ एल्स इफ एल्स। अगर हमारे पास बहुत कंडीशंस हैं, अगर एक दो कंडीशन है तो वी जस्ट यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ वी हैव मोर कंडीशन देन वी कैन यूज इफ एल्स इफ देन एल्स स्टेटमेंट। ओके, बट इससे भी इजी एक और कंडीशन है, वो है व्हेन कंडीशन। आई होप कि सी प्लस प्लस में ये व्हेन नहीं सुना होगा, सो इट इज अवेलेबल ओनली इन कॉटलिन। सो वाई वी आर यूजिंग व्हेन इफ यू हैव मल्टीपल ब्रांचेस। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो अभी हमने कोड किया था, वी हैव थ्री कंडीशंस। ओके, रेड येलो, अगर रेड येलो नहीं है तो गो, थ्री कंडीशंस थे। बट इफ वी हैव मल्टीपल मोर देन 5 to 6 कंडीशंस, तो बार बार हम इफ एल्स लिखेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। टू रिड्यूस दिस कोड वी हैव अदर स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड व्हेन स्टेटमेंट। ओके, तो व्हेन स्टेटमेंट में हम मल्टीपल ब्रांचेस यूज कर सकते हैं। तो इसका भी मैं एक बार कोड रन करके दिखा देता हूँ, so that you have an idea कि why we are using when statement. And also it improves the readability of code. Okay, so let me run the if when condition. Okay, तो यहाँ पे मैंने वही एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ट्रैफिक लाइट कलर इक्वल्स टू ग्रीन। सॉरी, ये इफ एल्स वाला ही था, वेट। if decision if else, yep, this one. Okay, तो यहाँ पे एक बार हम फिर से कोड देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया ट्रैफिक लाइट कलर, जिसका कलर है येलो। ओके, यूजर ने इनपुट किया येलो। अब यहाँ पे फिर हमने एक व्हेन यूज किया है विच इज़ अ कीवर्ड, प्री डिफाइंड कीवर्ड, और ये हम खुद डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड कीवर्ड है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द एंड्रॉयड डेवलपर्स। ओके, एंड हमने कंडीशन डाल दी ट्रैफिक लाइट कलर, और ट्रैफिक लाइट कलर में वैल्यू क्या है, येलो। ओके, यहाँ पे जो येलो सेटिस्फाई करेगा वही प्रिंट कर देगा। ओके, अब पहला कंडीशन था अगर रेड आता है तो क्या प्रिंट होगा, स्टॉप। दूसरा कंडीशन था येलो, अगर येलो आता है तो क्या प्रिंट होगा, स्लो। तीसरा कंडीशन था ग्रीन, अगर ग्रीन प्रिंट होता है तो क्या प्रिंट होगा, गो। अगर इसमें से तीनों कंडीशन फेल हो जाते हैं देन फाइनली जो कंडीशन है एल्स, एल्स में क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड ट्रैफिक लाइट कलर। ओके, तो यहाँ पे यूजर ने येलो दे रखा है, तो येलो में क्या प्रिंट होना चाहिए, रन करके देखते हैं, स्लो। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कलर, कलर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल पर्पल। ओके, और यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है पर्पल, तो क्या प्रिंट होगा, invalid traffic light color, because it will not satisfy red yellow green condition, it directly jump to the last else वाला पार्ट। जो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो एल्स वाला पार्ट में जो प्रिंट एलन लिखा होता है वही सेटिस्फाई करता है। आई होप वाई वी आर यूजिंग प्रिंट एलन टू प्रिंट द आउटपुट, जो भी कंडीशन का जो आउटपुट है वो प्रिंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। एंड व्हेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरो स्टेटमेंट। ओके, सो देख सकते हो कि जो हमने अर्लियर यूज़ किया था इफ एल्स वाला और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं व्हेन वाला, उसमें काफ़ी ईजी है कंपेयर टू इफ एल्स वाले में, और कोड भी हमारा एकदम शॉर्ट हो गया है, कंसाइज हो गया है। ओके, सो दिस इज इफ एल्स एंड व्हेन स्टेटमेंट्स। ओके, एंड उसके बाद एक और टर्म आता है व्हेन एंड इफ एल्स एज एन एक्सप्रेशन। ओके, सो एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में भी डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन में क्या करते हैं हम, एक्सप्रेशन में जो भी कंडीशन की जो वैल्यू होती है उसको हम एक और नए वेरिएबल में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी कोड को और क्रिस्प कर देता है, छोटा कर देता है। तो वो भी एक बार हम कोड देख लेते हैं कि हम व्हेन टू यूज एक्सप्रेशन एंड व्हेन टू यूज
conditions. Okay, तो बेसिकली एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज एंड फंक्शन दैट आर कंबाइंड एंड इंटरप्रेट बाय कंपाइलर टू क्रिएट अ न्यू वैल्यू. तो एक न्यू वैल्यू क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन. ओके, बट अर्लियर अभी जो हमने कोड राइट किया था वो थे स्टेटमेंट्स. ओके, एंड स्टेटमेंट क्या होता है? विच इज जस्ट अ स्टैंड अलोन यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड डजंट रिटर्न एनीथिंग. ओके, तो एक बार हम चेक करते हैं फॉर इफ एल्स के लिए एक्सप्रेशन. ओके, तो एक बार हम रन करके देख लेते हैं. जस्ट अ रिकैप फॉर बिल्डिंग अ डाइस रोलर ऐप. तो ये उस समय ऐप बनाने में कंडीशंस यूज होंगे, सो दैट आई एम गिविंग अ रिकैप कि हाँ इफ एल्स क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे सेम हमने ट्रैफिक कलर की वैल्यू ब्लैक है. यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया मैसेज. तो जो भी आंसर होगा वो डायरेक्टली मैसेज में इनपुट हो जाएगा. इस पे देख सकते हो कि कोड और छोटा हो गया. फॉर एग्जांपल इफ में जो कंडीशन है रेड, प्रिंट एलन सब रिमूव कर दिए हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर रेड आता है तो टॉप जो वैल्यू है वो कहाँ चले जाएगा? मैसेज के अंदर चले जाएगा. और प्रिंट क्या करेगा? मैसेज प्रिंट करेगा. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ पे कहीं पे ब्लैक अवेलेबल नहीं है, तो एल्स वाले कंडीशन प्रिंट करेगा. एल्स वाले कंडीशन में क्या है? इनवैलिड ट्रैफिक लाइट कलर. ये जो आउटपुट है ये कहाँ सेव होगा? मैसेज वाले वेरिएबल में सेव होगा. और प्रिंट क्या होगा? मैसेज प्रिंट होगा. ओके, तो ये रन करके देखते हैं. सो इट विल प्रिंट इनवैलिड ट्रैफिक लाइट कलर. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो आउटपुट है वो मैसेज में प्रिंट हो रहा है और मैसेज फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस. या स्टेटमेंट इससे पहले वाला था. And similarly we can use for when. Let's see. या तो यहाँ पे हमने पहले इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया था. नाउ वी आर यूजिंग व्हेन स्टेटमेंट. तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या है? अगर रेड आता है तो स्टॉप प्रिंट होना चाहिए, येलो आता है तो एम्बर, नहीं तो प्रोसीड विद कॉशन. एक और चीज यहाँ पे मैंने ऐड किया है, कॉमा. तो अर्लियर जो भी कंडीशन थे उसमें कॉमा यूज नहीं था. तो व्हेन में एक और खासियत क्या है कि हाँ यू कैन यूज मल्टीपल कंडीशन एट अ सेम टाइम. ओके, यहाँ पर रेड इज वन कंडीशन. अगर रेड आता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? स्टॉप. सेकंड कंडीशन क्या है? अगर येलो नहीं तो एम्बर आता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए? प्रोसीड विद कॉशन. अगर इसमें से कुछ भी आता है तो ये लाइन प्रिंट होगा. ओके, so we are using multiple, we can use comma operator to use multiple condition at the same time. Okay, that's why we are using comma operator. And green clear go, else invalid traffic light color. And suppose यहाँ पे एम्बर के बदले हम येलो प्रिंट करते हैं. यूजर ने येलो प्रिंट किया है, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है? येलो वाली पार्ट. तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? प्रोसीड विथ कॉशन. ओके, सो ये था एक्सप्रेशंस. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था स्टेटमेंट्स. सो वी हैव लर्न की कंडीशन स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, इफ एल्स एंड व्हेन, विच वी यूज इन आवर डाइस रोलर ऐप. ओके, एंड इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर द टू लर्निंग द फंडामेंटल. उसके बाद यू हैव टू लर्न कि क्लासेस क्या होते हैं, हाउ टू रन अ क्लास, एंड हाउ टू build objects class, how to declare a class, which you will learn, which you will able to complete while going through all these learning platforms, because it's not possible to complete in a 1 hour. Okay, that's why they give a time to complete it within a week. Okay, I'm just giving a recap कि क्या क्या तुम्हें complete करना है. So यहाँ पे एक बार मैं शो शेयर कर देता हूँ. So unit 1, cotton fundamentals. um, हाँ, we have done conditions in Kotlin. After that we have to learn कि nullability क्या होता है. Basically nullability में क्या होता है? We can declare uh, function code inside as an argument. कैसे हम यूज़ करते हैं फंक्शन कोड को आर्गूमेंट में, तो इसमें वो बता रखे हैं, एक्सप्लेन कर रखे हैं. उसके बाद यू विल एबल टू लर्न हाउ टू यूज़ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन Kotlin, which for this you have to complete this code lab. After that they have jumped into lambda expressions क्या होते हैं, फंक्शन टाइप्स क्या होते हैं. ओके, फिर जैसे ही तुम कंप्लीट कर देते हो फिफ्थ तक,
Then there is the Kotlin fundamental practice. तो वहाँ पे certain questions दिए होते हैं, you have to complete it. Okay. For example, these are the questions and इसके answers भी available हैं, so solutions. So जो भी हमने अभी conditions पढ़े हैं, तो उसका अगर तुम्हें practice करना है, then you can use this practice Kotlin fundamentals. तो ये सब यूज करके बता रखे कि हाउ टू यूज ए फर्स्ट स्टेटमेंट, हाउ टू यूज व्हेन स्टेटमेंट, हाउ टू यूज क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, nullability functions. So you have to complete all these code labs, okay, after today's session. So yeah, so ये था basic Kotlin fundamentals. Now we are going to create dice roller app where we use when condition, okay. And if you have any doubt, you can ask me through the comment section. I think सबको समझ आ रहा है, that's why no one is asking any question. And yeah, we can jump into the Android, how to create a dice solar app, okay. And yeah, for this you have to install the Android Studio. So let me share the Android Studio. Wait, your entire screen, tab, cancel, window, this one. What if we have implemented a line of code and okay, so basically this is the UI of Android Studio ki how it is visible. And अगर text की size अगर और increase करना, then you can put it in the comment so that I can increase the text size in the app, in the Android Studio. And so I think, I hope कि everyone can see the text properly. Okay. So ये मैंने already आज एक ऐप बना रहा था. So let me start from the basics. Okay, how to build an app from start. So after installing the app, you just have to click new project. Okay. After that, there are lots of predefined template which is focusing on compose activity. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई ऐप बना रहे हो जिसपे गूगल मैप एक्टिविटी ऑलरेडी चाहिए तुम्हें, देन यू कैन यूज दैट टेम्पलेट वेयर ऑलरेडी गूगल मैप की एक्टिविटी उस पर इंस्टॉल होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू इंस्टॉल, इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट ऐप, ओके, वेयर यू वांट टू इंटीग्रेट गूगल एपीआई या गूगल पे, सो यहाँ पे जो टेम्पलेट है वो गूगल पे के लिए है. सो यू नीड नॉट टू क्रिएट और राइट मोर code. Just use this template and add a payment integration so that you can easily build an app. Okay. तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि जो पुराने वाले जो प्रोजेक्ट वो था स्टेप्स, वो आई थिंक तुम्हें विजिबल नहीं था, बिकॉज मैंने दूसरा विंडो ओपन किया था. ठीक है. तो ये सब स्टेप्स आई थिंक तुमने देख नहीं पाए. तो एक बार मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ. फाइल में जाके न्यू, वेट, हाँ, न्यू प्रोजेक्ट, empty compose activity next, फिर application name dice roller. Okay. And you have to select the minimum SDK which is 21 5.0 and finish. तो ये था. अब it will take less than 1 minute to reload the Gradle. Okay. एंड ये पता होगा आप सबको, ये वर्चुअल फ़ोन है where you can easily see the output of all the code. And there is a design panel where you can also see what we have updated our design part. Okay. And एक बार हम इसको कोड करके देखते हैं. we'll start. Just wait, I have just removed this virtual machine so that you can easily see the code. Wait. Virtual emulator. Yep. तो यहाँ पे बेसिक जो भी
कोड था वो मैंने रिमूव कर दिया है। तो ये जब भी तुम कोई भी ऐप स्टार्ट करोगे तो ये show gap. These are all imported libraries which we have already imported. Okay, you need not to import any extra libraries. ठीक है, and side में तुम देख सकते हो project panel है where all the project files are there, and there is a resource manager where you have to install images, videos, जो भी external जो तुम्हें update करना है, you can use in resource manager. And there is a project part, and inside the project, currently we are inside main activity.kt, and main activity.kt is the Kotlin file where we have to write our code. Okay, so yep. तो कोड लिखने से पहले जो भी डाइसेस के जो इमेजेस है मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ. ओके, फॉर इंस्टॉलिंग दैट वी हैव टू गो टू रिसोर्स मैनेजर वेयर ऑल द इमेजेस विल बी इंस्टॉल्ड. रिसोर्स मैनेजर के अंदर यहाँ पे एक प्लस ऑप्शन है, ऐड रिसोर्सेज टू द मॉड्यूल, रिसोर्सेज ऐड करने के लिए. देन वी हैव टू क्लिक इम्पोर्ट ड्रॉएबल्स. जितने भी इमेजेस होते हैं वो सारे ड्रॉएबल नाम के एक फोल्डर में सेव होते हैं एंड्रॉयड वाले पार्ट में. ओके, एंड ये सारे इमेजेस मैंने डाउनलोड कर लिया था. And dices के जो भी images है they are also listed in the learning path. You just have to download it from there. Okay, so I've already downloaded it, and just you have to click dice 1, dice 2. Just wait. So I have downloaded 6 dices. Okay, just click import drawable, dice 1, dice 2, dice 3, dice 4, dice 5, dice 6. Okay, and just click OK, and यहाँ पे next कर देना है and import. तो ये 6 dices are installed in my project, which is dice app project. Okay, and yeah, we will start writing our code. I've already written it in a Google Doc file so that it will not take much time to write in the session. So I'm just copying the code from the Google Doc. Okay, we'll see. Okay, dice roller. एक बार मैं कोड लिख लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, बोलो फंक्शन. यप, यहाँ पे मैंने डाइस रोलर एक फंक्शन कॉल किया है. ठीक है, डाइस रोलर. अब यहाँ पे मैं यूआई बना रहा हूँ कि हाउ द ऐप विल बी विजिबल, एंड जो भी व्हेन कंडीशन जो हमने पढ़ा है वी विल आल्सो इम्प्लीमेंट इट inside this function. Okay, and at the red preview which is comes in the composable, at the red preview and at the red composable are predefined annotation which is used to design our UI part. Okay, and inside the at the rate composable we have defined a function which is called dice roller. Okay, and call कहाँ किया है हमने, call हमने dice app theme के अंदर किया है. Okay, तुमने सबको पता है कि हाउ टू राइट अ फंक्शन, हाउ टू कॉल अ फंक्शन, विच इज़ ऑलरेडी डिस्कस इन यूनिट 1 पार्ट. तो जस्ट यहाँ पे मैंने डाइसोलर फंक्शन कॉल किया है और यहाँ पे मैं डाइसोलर फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ. ओके, सो इनसाइड द डाइस रोलर फंक्शन आई हैव रिटन अनदर फंक्शन, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे डाइस विथ बटन एंड इमेज फंक्शन कॉल किया है. ओके, एंड अभी ये रेड दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो भी कंपाइलर है उसको पता नहीं है कि हाँ डाइस विद बटन एंड इमेज कुछ है भी कि नहीं. तो इसके लिए हमें डिफाइन करना होगा उस फंक्शन को. ओके, तो एक बार वो भी चेक कर लेते हैं हम. डाइस एंड इमेज, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. ओके, तो अभी हम कौन से पार्ट पे थे, एट द रेट प्रीव्यू, एट द रेट कंपोजेबल. We have defined a function dice roller. Inside the dice roller we have also defined another, we have declared call another function which is dice with button and image, where where we will create button or image part. Okay, and we have already installed all the 6 dices image. ठीक है, नाउ मैं एक और कंपोजेबल एनोटेशन कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, डाइस विथ बटन एंड इमेज डिफाइन कर रहा हूँ. ओके, यहाँ पे कॉल किया था, यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ.
एंड यहाँ इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ जहाँ पे हमारे ऑल द आउटपुट विल बी स्टोर्ड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट, जो हमने पढ़ा था। यहाँ पे हमने वेर रिजल्ट डिक्लेयर किया है, वेर रिजल्ट बाय रिमेंबर. Inside that, we have also written a predefined function which is called mutable state of. Mutable state of तुम आगे जाके पढ़ोगे कि हाँ क्या होता है mutable state of, stateless, stateful objects, ये सब तुम यूनिट नेक्स्ट में पढ़ोगे. ओके, रिमेंबर मैं बता देता हूँ रिमेंबर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जब भी तुम ऐप स्टार्ट करोगे वो शुरू से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसको पता नहीं है कि पीछे जो भी रिजल्ट के अंदर जो भी इनपुट है कि नहीं. तो उसको रिमेंबर करने के लिए, उसको मतलब रिकॉल करने के लिए वी आर यूजिंग रिमेंबर कीवर्ड. ओके, बट यहाँ पे अभी रेड शो हो रहा है विच शोज कि कंपाइलर को कुछ पता नहीं है कि हाँ रिमेंबर क्या है. तो बट फॉर दैट वी हैव टू इंस्टॉल import दैट रिमेंबर. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है import. तो जस्ट हैव यू हैव टू क्लिक राइट क्लिक, यहाँ पे फिर एक ऑप्शन आएगा import. तो इंपोर्ट कर दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फिर इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट में पूरा इंपोर्ट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं इंपोर्ट कर देता हूँ. जस्ट वेट. ऑल्सो यू कैन सी द एरर, जो भी ये रेड रेड शो हो रहा है अंडरलाइन, यू कैन ऑल्सो चेक कि हाँ क्या एरर आ रहा है. ओके, यू जस्ट हैव टू क्लिक इट एंड सी कि हाँ क्या एरर है. import get value and mutable function. Okay, now we have already import all the keywords. Wait. नाउ वी हैव सक्सेसफुली इम्पोर्ट द रिमेंबर कीवर्ड. यहाँ पे तुम देख सकते हो इम्पोर्ट मटेरियल टेक्स्ट मॉडिफायर एंड्रॉयड कंपोज एग्जाम्पल टूलकिट प्रीव्यू रन टाइम मटेरियल surface time foundation. I think it will take some time to update here. जो भी तुम import करोगे by default यहाँ पे सब import शो हो जाएगा. ओके okay. तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है रिजल्ट वेयर ऑल द आउटपुट विल बी स्टोर्ड एंड ऑल्सो विच विल रिमेंबर कि हाँ क्या क्या स्टोर किया था. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रिमेंबर कीवर्ड. ओके, एंड यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट के अंदर हमने वैल्यू 1 डिफाइन किया है, मतलब पहला वैल्यू कि क्या शो होना चाहिए. ओके, एंड यहाँ पे हम देखते हैं जो अभी हमने रिसेंटली कंडीशन के बारे में पढ़ा था. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं एज अ एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं वेयर वी स्टोर ऑल द डेटा इनसाइड डाइस इमेज वेरिएबल. ओके, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है डाइस इमेज एंड इनसाइड द डाइस इमेज वी हैव डिफाइन अ वी हैव कॉल अ कंडीशन. वी आर यूजिंग वन कंडीशन एंड वन कंडीशन हमने क्या किया है कि अगर वन शो होता है आउटपुट तो क्या शो होना चाहिए आर डॉट ड्राइबल डॉट डाइस वन. अगर आउटपुट में अगर टू होता है, कंडीशन टू होता है तो डाइस टू इमेज होना चाहिए. अगर कंडीशन थ्री होता है तो डाइस थ्री की इमेज होना चाहिए. एंड ये ड्रॉबल क्या था, ड्रॉबल एक वो फोल्डर है जहाँ पे डाइस वन इमेज स्टोर है. ओके, एंड आर क्या होता है, आर एक रिसोर्स क्लास है वेयर ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट है वेयर वी स्टोर ऑल द इमेजेस या ऑल द रिसोर्सेज. ठीक है, ये सब प्री डिफाइंड है आर डॉट ड्रॉबल. यू जस्ट हैव टू यूज इट. ओके, ये सब यूनिट वन के अंदर जो हमने इमेजेस वाला पार्ट किया था, हैप्पी बर्थडे वाला पार्ट, उस पर वी आर यूजिंग, उसमें वो डिफाइन था कि आर क्या होता है, ड्रॉबल क्या होता है. तो यहाँ पे हम जो भी इमेजेस है वी आर स्टोरिंग आर डॉट ड्रॉबल डॉट डाइस. सेकेंड में आर डॉट ड्रॉबल डॉट डाइस टू. ओके, एंड आफ्टर एल्स में आर डॉट ड्रॉबल डॉट डाइस सिक्स. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी आर यूजिंग कॉलम. कॉलम को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये रेड शो कर रहा है. तो वी आर जस्ट इंपोर्टिंग द कॉलम पार्ट एंड ये कॉलम इंपोर्ट हो गया. कॉलम तुम्हें पता होगा कॉलम क्या होता है, वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं. मान लो कि हमने कॉलर डिफाइन किया है, उसके बाद जो भी हम पुट करेंगे कॉलम के अंदर वो फिर वर्टिकली शो होगा हमारे ऐप में. ओके, जैसे कि एक मैं
आफ्टर एक बार मैं इसको रन करके दिखाऊंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वेयर आई एम यूजिंग कॉलम। ओके, फिर कॉलम के अंदर मैंने और दो तीन चीज़ें डिफाइन किया है। ये सब क्या होता है, दे आर ऑल मॉडिफायर्स। वर्टिकल अरेंजमेंट इज इक्वल टू अरेंजमेंट डॉट टॉप, कि जो हमारा जो इमेज है वो कहाँ शो होना चाहिए, वो टॉप में शो होना चाहिए। वो सब अरेंजमेंट किया, लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ये सब मैंने डिफाइन किया है। फिल मैक्स साइज मतलब वो पूरा स्क्रीन को पूरा मतलब फिल कर ले, मतलब ऐसा होना चाहिए। एंड मॉडिफायर क्यों यूज करते हैं, टू डिफाइन या टू एडजस्ट स्क्रीन, कि कहाँ पे इमेज कैसा होना चाहिए। इमेज टॉप पे होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, इमेज एकदम पूरा कवर अप होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, अरेंजमेंट डॉट टॉप। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं विच आर यूजिंग टू डिजाइन आवर ऐप। Then we are you calling another predefined function which is an image. Okay, इमेज के अंदर हमारा जो डाइस इमेज जो हमने डिफाइन किया था वेरिएबल, वो इंस्टॉल, वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। ओके, तो इमेज के अंदर हमने आईडी किया है डाइस इमेज। कंटेंट डिस्क्रिप्शन हमने कुछ नहीं दिया है, स्पेस है। उसके बाद फिर इमेज को हम फिर डिफाइन करें कि इमेज का साइज कैसा होना चाहिए। मॉडिफायर हमने डिफाइन किया। उसके बाद फिल मैक्स विड्थ, जो भी डाइस की इमेज है वो पूरा मैक्स, पूरा विड्थ कवर अप हो जाए स्क्रीन का। एंड डाइस की जो इमेज का जो हाइट है वो कितना होना चाहिए, 140 डॉट dp. Earlier in web page or any other website, we are using pixels or yeah, different inches, centimeter. But in Android, we are using dp/sp. तो वो easily screen resolution के हिसाब से adjust करता है. That's why we are using dp/sp. तो ये सब मतलब एक इमेजेस को वो डिफाइन करता है कि इमेजेस कैसा होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए। ओके, तो इसको जितने भी रेड वाले पार्ट है ये सब इम्पोर्टेड नहीं है, तो मैं जस्ट आई एम जस्ट इम्पोर्टिंग ऑल दिस थिंग्स। images, you just have to right click it and just import image, painter, control z, import android media, control z। फिर हमने इमेज प्रिंट कर दिया, देन वी हैव टू प्रिंट अ बटन जो कि क्लिक होगा रोल। ठीक है, तो बटन को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जस्ट वेट, इंपोर्ट बटन। यप, बटन इज ऑलरेडी इंपोर्टेड। एंड बटन के अंदर एक प्री डिफाइंड एक फंक्शन है ऑन क्लिक, कि बटन को जब तुम क्लिक करोगे तो क्या शो होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक ऑन क्लिक के अंदर हमने एक लैम्डा फंक्शन डिक्लेयर किया है। अभी मैंने अर्लियर बताया था कि लैम्डा हम कब डिफाइन करते हैं, फंक्शन कोड को हम किसी फंक्शन के अंदर यूज करने के लिए एज एन आर्ग्यूमेंट वी आर यूजिंग लैम्डा फंक्शन, कि हम फंक्शन नेम डिफाइन नहीं करते। फंक्शन के अंदर जो भी बॉडी, जो भी हमने कोड लिखा है उसको हम एज अ आर्ग्यूमेंट यूज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन एक तरह का फंक्शन ले लो, कि जब भी बटन ऑन क्लिक होगा क्या अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट किया था, रिजल्ट हमने डिफाइन किया था कि 1 2 3 4 5 6, यूजर इसमें से जो भी क्लिक करेगा उस हिसाब से वो प्रिंट होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने एक रैंडम फंक्शन यूज किया है कि हाँ जब भी तुम क्लिक करोगे तो 1 से 6 के अंदर कुछ भी प्रिंट होना चाहिए, कुछ भी मतलब डाइस शो होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रैंडम फंक्शन। ओके, एंड ये जो कंडीशंस हैं कि वन कंडीशन में क्या शो होगा, डाइस वन इमेज शो होगा। टू कंडीशन में क्या शो होगा, डाइस टू, थ्री में डाइस थ्री, फोर में डाइस फोर, फाइव में डाइस सिक्स, नहीं तो डाइस फाइव या सिक्स शो होगा। ठीक है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग 1 डॉट 6 रेंज है, ये 1 से 6 के बीच में क्या क्या प्रिंट हो सकता है। डॉट रैंडम की 1 6 4 5 कुछ भी प्रिंट हो सकता है। ठीक है, एंड देन वी आर यूजिंग मॉडिफायर। मॉडिफायर किसके लिए यूज करते हैं, एडजस्टमेंट, कि हाँ इमेज कैसा दिखना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, विच यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि किस हिसाब से शो होगा। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लिख ली, इमेज पुट कर दिया यूजिंग इमेज फंक्शन, बटन हमने ऐड कर दिया इमेज के नीचे, और बटन के अंदर हमें टेक्स्ट ऐड करना है। ओके, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, रखो रोल। उसका तो हमने वो भी वैल्यू। यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन के अंदर हमने रोल डिफाइन कर लिया। ठीक है, बस खाली यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इमेज। लेट्स import it, android compose syntax, and just wait, enter image,
यप। तो इमेज भी अब हमारा एरर अब नहीं आ रहा, इमेज में भी एरर। ओके। तो हाँ, यहाँ पे जो भी मैंने इंपोर्ट किया ये प्री डिफाइंड यहाँ पे शो हो जाएगा। फॉर यहाँ पे मैंने डीपी इंस्टॉल किया था इंपोर्ट, इट विल शो इट एट द टॉप ऑफ द कोड। ओके, तो ये सारे यहाँ पे अभी हमने इमेज इंपोर्ट किया तो इमेज यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ये जो भी हमने फंक्शन यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट इट एंड देन वी कैन यूज इट इन आवर ऐप। तो हमारा ये जो कोड है सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर लिया है। नाउ वी हैव टू रन इट ऑन आवर वर्चुअल मशीन। ओके, तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। जस्ट वेट। इट विल टेक couple of minutes to load, थोड़ा टाइम लगाएगा। till then, if you have any doubt you can ask in the comment section. Use third option in image, I was facing same issue. Use third option in image. दिवेज एक बार आप अनम्यूट करके बताओगे सो दैट आई कैन इजीली अंडरस्टैंड आप क्या पूछने वाले हो। आई वॉज फेसिंग सेम इशू, यूज थर्ड ऑप्शन इन इमेज, ये वाला जो आपने लिखा है दिवेज, इफ यू आर देयर इन द मीट। भैया मैं कह रहा था कि वो इमेज में जब आपका इंपोर्ट नहीं हो रहा था ना, हाँ 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 हाँ। हाँ, तो फिर उसमें जो वो थर्ड ऑप्शन था ना जिसमें वो अच्छा अच्छा, ओके काटा ओके। हुआ था वो वाला, हम्म। मेरे भी ओके। पहले प्रॉब्लम आ रही थी ऐसे इंपोर्ट करने में। हाँ, मतलब इंपोर्ट करने में बहुत इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं तो इन सबको हमें इंपोर्ट करके ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट में वैसा नहीं है कि राइट क्लिक करके वहाँ पे ऑप्शन होता है इंपोर्ट करके, तो डायरेक्टली तुम इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। तो एक बार ये आई थिंक ये लोड होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, ग्रिडल बिल्ड रनिंग, थोड़ा वेट कर रहे थे, देन इट विल डायरेक्टली वी कैन इजीली एक्सेस द कोड हाउ इट गोज। तो आई होप कि ये थोड़ा समझ आ गया होगा। मतलब आई मुझे पता है कि एक तो मोस्टली स्टूडेंट आप बिगनर, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा टू हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कोड, क्योंकि मेरे को भी डिफिकल्ट फेस हुआ था, क्योंकि मेरे को भी टाइम लगा टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू बिल्ड अ डाइस रोलर ऐप। क्योंकि मैंने भी मतलब 2-3 दिन टाइम दिया था कि ये मॉडिफाई क्या होता है, डाइस रोलर हमने क्यों यहीं पे क्यों लिखा है हमने। ओके, क्योंकि जो हमने बेसिक्स पढ़ा था कॉटलिन का और जो अभी हम पढ़ रहे हैं थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमें सिंटेक्स देखना पड़ेगा। ऐप इज रनिंग, टर्मिनेट, डिस्कनेक्ट, ग्रिडल, आई थिंक दूसरा ऐप कोई चल रहा है, वेट। यप, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। या इट विल टेक some time to load the virtual machine. Yep. तो फाइनली ये वर्चुअल मशीन लोड हो गया है। बस मैं एक यहाँ पे एक चेंज कर देता हूँ, अरेंजमेंट डॉट टॉप है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अरेंजमेंट डॉट सेंटर। अरेंजमेंट डॉट सेंटर एंड वापस यहाँ पे तुम्हें बिल्ड करना है तो यू हैव टू क्लिक बिल्ड रिफ्रेश, और अगर इम्यूलेटर को तुम्हें रन करना है फिर से यू हैव टू क्लिक रन ऐप। फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया है, एक रोलर है, बस वी हैव टू टेस्ट इट कि हाँ वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, जस्ट वेट, टर्मिनेट, या तो पहले टॉप पे था तो आई हैव जस्ट चेंज द अरेंजमेंट कि अब बॉटम में आ गया है। ठीक है, तो ये तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार रन करके देखता हूँ क्लिकिंग रोल। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डाइस रोल हो रहा है। जो भी 6 इमेजेस थे तो ये अपने आप एक इमेज में जो भी इमेज होगा वो रोल हो रहा है, सेकंड इमेज में जो है वो रोल हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम ये देख सकते हो।
तो यहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ हो रहा है, हमने एक रैंडम फंक्शन यूज़ किया है। जब भी हम रोल क्लिक कर रहे हैं तो 1 से लेके 6 के बीच जो भी केसेस हैं या जो भी कंडीशंस हैं वो रिकॉल हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाइस रोलर हमने फंक्शन कॉल किया, ठीक है। अब वो डाइस रोलर पे जाते हैं हम। डाइस रोलर पे हमने यहाँ पे लिखा है फंक्शन डिफाइन। तो डाइस रोलर के अंदर हमने एक और फंक्शन कॉल किया है, डाइस विथ बटन एंड इमेज। फिर हम डाइस विथ बटन एंड इमेज के अंदर जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने एक कंडीशन लिखा है, व्हेन कंडीशन हमने यूज़ किया है। 6 केसेस बनाए हैं कि हाँ 1 से 6 के अंदर जो भी हम क्लिक करेंगे रोल, उसके हिसाब से वो इमेज शो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने डिज़ाइन के लिए हमने क्या-क्या यूज़ किया है, वी आर यूजिंग कॉलम। कॉलम क्यों यूज़ किया? फॉर द अरेंजमेंट पर्पसेज़। यहाँ पे डाइस पहले शो होना चाहिए, फिर रोल शो होना चाहिए, तो मतलब टॉप टू बॉटम। और अगर यहाँ पे मैं रो यूज़ करता, ROW लिखता, तो जो डाइस है और जो रोल है वो एक लाइन में शो होता, ठीक है। हॉरिजॉन्टली शो होता। तो वर्टिकली शो होने के लिए वी आर यूजिंग कॉलम। कॉलम के अंदर वी आर यूजिंग सम मॉडिफायर लाइक अरेंजमेंट हो गया या फिल मैक्स साइज हो गया। तो ये सब तुम्हें देखना होगा कि हाँ किस हिसाब से तुम चेंज कर सकते हो। पैडिंग हो गया और हाइट हो गया, विड्थ हो गया, डेप्थ हो गया, मतलब जो भी है, तो तुम वो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वी आर कॉलिंग अनदर फंक्शन विच इज़ कॉल्ड बटन, ठीक है। बटन के अंदर ऑन क्लिक के अंदर मैंने लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर दिया है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके नीचे वी आर यूजिंग टेक्स्ट जस्ट रोल। एंड जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑन क्लिक कर रहा हूँ, तो ये इमेजेस अपने आप चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ बेसिक डाइस रोलर ऐप। तो इसमें हमने क्या-क्या यूज़ किया है, व्हेन कंडीशन, इमेज और सम मॉडिफायर्स, कॉलम, बटन्स, टेक्स्ट, ठीक है। सो एक सिंपल डाइस रोलर ऐप हमने यूज़ किया है। और विद इन 30 टू 40 ट्वेंटी लाइन के अंदर हमने कंडीशन प्लस एक हमने डिज़ाइन भी बना दिया। और यही कोड तुम अर्लियर एक्सएमएल फाइल में करते या दूसरे प्लेटफॉर्म में करते, दूसरे अर्लियर टाइम में, तो अराउंड 100 या 200 लाइन लिखना पड़ता, ठीक है। तो विद इन 60 लाइन या 30 टू 20 लाइन के अंदर यू कैन ईजिली डिज़ाइन अ रोलर ऐप, डाइस रोलर ऐप, ठीक है। तो ये बेसिक था हाउ टू क्रिएट अ डाइस रोलर ऐप। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो डिज़ाइन पार्ट। डिज़ाइन क्या होता है, विच डायरेक्टली शो किया इमेज कहाँ पे है, इमेज मतलब इमेज का अरेंजमेंट कहाँ पे है। तो तुम ये इससे भी तुम इजीली अपने जो कोड है उसको तुम सेट कर सकते हो। यहाँ पे तुम वैल्यूज चेंज कर सकते हो कि हाँ हाइट में अगर ज़्यादा दे देता हूँ तो कैसा हो, इमेज कैसा आएगा, कम दे देता हूँ तो इमेज कैसा होगा, वो तुम्हें अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये कोड था, ये डिज़ाइन था, और ये फाइनल आउटपुट कि कैसा तुम्हारे ऐप में शो होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डाइस रोलर ऐप था। तो विद इन 20 टू 30 मिनट के अंदर वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ डाइस रोलर ऐप। एंड आई होप कि ये डाइस रोलर ऐप तुम इजीली बना सकते हो अब। एंड नाउ जंप टू द यूनिट 3 which we have to complete next week. Okay, just wait. Stop presenting. I've also created a tip calculator app. तो आई अभी टाइम कम है हमारे पास, आई एम नॉट एबल टू शो इट बिकॉज इट टेक 5 to 10 मिनट टू रन दैट ऐप। बट यू कैन ट्राई इट बिकॉज जो भी कोड्स है दे आर ऑल अवेलेबल ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यू जस्ट हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप्स एंड यू कैन easily build that tip calculator app. Okay, so let me go to the create add image part, presentation, wait, share. Mm, full screen. Okay. तो ये था डे 2 जो हमने आज सीखा है कि हम बेसिक कंडीशंस, देन हाउ टू ऐड बटन, हाउ टू ऐड टेक्स्ट इमेजेस, हाउ टू इंपोर्ट इमेजेस, एंड सम बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ Kotlin programming. Okay. Day 3 we will try to shift the date because 29th of September थर्सडे है। तो वी विल ट्राई कि हम जो डे 3 वाला सेशन है वो हम 2nd of October को शिफ्ट कर दें, मतलब संडे, सो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन इजीली टेक पार्ट इन द डे 3।
तो डे 3 में हम बेसिकली कलेक्शंस इन कॉटलिन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा एडवांस कॉटलिन, स्क्रोलेबल लिस्ट इन कॉटलिन कि हाउ टू स्क्रोल। अभी तो हमने एक स्टैटिक एक इमेज बनाया है, मतलब एक पेज। स्क्रोलेबल में तुम कैसे स्क्रोल कर सकते हो। एनिमेशन इन ऐप, हाउ टू ऐड एनिमेशंस, तो वी विल डिस्कस इट इन डे 3 पार्ट। ओके, सो डे 3 में ये सिलेबस है। तो आई होप कि आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट 2 यू कैन स्टार्ट यूनिट 3, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी ज्वाइन करो तो यू हैव सम आइडिया कि हाँ क्या हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 में। ओके, देन फाइनली वी विल रैप अप विथ यूनिट 4। ओके, तो यूनिट 4 के बाद योर एंड्रॉयड कंपोज कैम विल बी डन। ओके, एंड हर यूनिट में दो दो तीन तीन ऐप है। फॉर एग्जांपल यूनिट 2 के अंदर एक डाइस रोलर ऐप था और एक टिप कैलकुलेटर था। ओके, तो यू कैन ट्राई द टिप कैलकुलेटर ऐप। ओके, तो वो तुम देख सकते हो। एंड यप, तो द थर्ड वाला जो प्ले पाथवे, वो उस पे तुम बनाओगे कि हाउ टू क्रिएट अ टिप कैलकुलेटर ऐप वे यू इंटरेक्ट विथ यूआई और स्टेट की। हाँ, स्टेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के अंदर तुम कुछ लिख रहे हो तो वो शो होना चाहिए, मतलब कि कैसे शो होगा। तो सब इंटरेक्ट विथ यूआई एंड स्टेट में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो इट्स अ 4 आवर लर्निंग पाथ। तो जैसे ही यूनिट 1 कंप्लीट कर दो, ट्राई टू कंप्लीट यूनिट 2 बाय विद इन 3 to 4 days, फिर देन जंप ऑन टू द यूनिट 3, सो दैट अगले संडे तक तुम्हें थोड़ा आइडिया हो कि हाँ क्या हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 के अंदर। ठीक है, तो ये था बेसिक्स। तो अगर अभी भी कुछ भी किसको कुछ शेयर करना है या कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं अभी। ये है। तो या दैट्स इट, एंड इट्स अ क्यू एन ए टाइम। तो लेट्स हैव 1 to 2 minute Q&A। ठीक है, then we can wrap up this session. There are around 21 students still in this meet, and try करना कि यूनिट 3 एंड यूनिट 4 8 of October तक कंप्लीट कर दो, सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेशन एंड बैचेस ऑल्सो। ओके, तो यूनिट 4 तक तुम्हें कंप्लीट करना है बाय 8 of October। ओके, एंड आई होप कि आज का सेशन सबको पसंद आया होगा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट था टू अंडरस्टैंड सम सिंटेक्स एज वेल एज कीवर्ड्स विच इज़ न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, कि एनोटेशन क्या होता है या वाई वी हाउ टू इम्पोर्ट समथिंग। तो आई होप कि after completing this unit 2, or after this session, one of our core member will share the recording for the unit 2, and this recording will be available for few days. Then we will then we will private it, so that जो भी students है they can easily watch the session within 1 to 2 days के अंदर। ठीक है, तो ट्राई करना कि रिकॉर्डिंग को देख लो वापस, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड जो हमने डे 2 पढ़ा था, एंड follow the unit 2 learning path which is provided by Divyanshi right now। ठीक है, तो तुम ये देख सकते हो ना, बेसिकली इट्स अ डेवलपर प्रोफाइल। तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ डेवलपर प्रोफाइल, देन स्टार्ट यूनिट 2। ओके, सो दैट यू कैन अर्न बैचेस साइड बाय साइड। सो आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं है, एंड मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट संडे। एंड या लेट्स say goodbye to everyone, and we will meet on Sunday।